लास्ट टाइम जब हम क्या नाम है, हम एक स्कूल में पढ़े, ठीक है, तो एट दैट टाइम I think everyone was very carefree and living life and also discovering things and all of that. Absolutely. But I see a different Farah in front of me today. Why? उसके ऊपर तो हम आएंगे कि क्यों वो हुआ है या नहीं हुआ. But at the time in school, what are some of the experiences that you had that really sort of, as you would say, shaped your life in a way, like where you are right now? School was like 11 years ago, by the way. Oh my God. Stop making me feel old. I think not even 11, like 13 years ago. Okay. So, yeah, you pointed that out correctly, that I've evolved. And that's part and parcel of, I think, growing up. But you're also right that we were so carefree. And I think one of the best times was being in high school. Yes. And we had a lot of fun. Yes. If I recall, we had a lot of fun at Beeman's, the Model United Nations. Yeah. I categorically remember you and your better half. Yes. Now my better half. Now your better half Yeah. was always meant to be. Yeah. Were heading socials. So you guys used to do all the social events. And the Beeman that, I was part of as a chair had one of the best socials. Yes. Because of you and your better half. Yes. Can I take her name on this? Sure. Okay, do. Javeria. Yes. Yeah. And while we were going through that carefree time, I learned some important lessons. It was carefree, but it wasn't lesson free, Yes. For example, you guys did such an amazing job with socials. So one of the things we all learned was playing to your strengths. Yeah. So each person is gifted Yeah. by nature in one way or the other. And the more in sync they are, the more successful they would be, the more true they are to themselves. I think that was a very important lesson, being true to yourself while growing up. असल में उस टाइम पे जो एक दो चीज़ें थी, as in के we did end up making an event management company that failed eventually. Yeah. But I think उस वक्त की जो skills हैं of management itself, वो साथ रह जाते हैं. So sometimes you do think कि मेरा जहाँ पे scope है, मेरा जहाँ पे मतलब मैं स्कूल में यहाँ पे fit था, debating में fit था, फलाना था. But sometimes वो skills किसी और फील्ड में आपको बड़ा फ़ायदा दे जाते हैं. That's just what I think. So how did your debating sort of experiences in both school and university, how did that help what you're doing right now? Okay, so yeah, rightly put. I think I was a debater, and it really helped me in challenging the frontiers of how things are thought about and why things are the way they are. So बहुत ज़्यादा why पूछने का मौका मिला as a debater, and बहुत सारा why not पूछने का मौका मिला. I remember in the Beeman that we're talking about, we experimented with a new committee. So it's a United Nations model, right? Yeah. You can have UN committees. Yeah. But we experimented with making a new committee, and I chaired that. That was the Pakistan National Assembly. So, when we experimented, we had no clue what kind of response that would garner and whether it would be a hit or a miss. And we were very comfortable with that at that point in time, because failure was not something teenagers are really scared of. Yeah, that's true. So when we did that experiment, I remember it had its registration went through the roof. A lot of people wanted to be part of the Pakistan National Assembly. Then we made it bilingual. So I think a lot of people got interested because they could also talk in Urdu in those model sessions. Yeah. And then on top of that, instead of representing countries like in the United Nations model, they were able to represent personalities. So it made it much more real for them. Once you've experimented and something is a hit, it kind of removes those barriers or those fears of, trying new horizons out there. I think failure का एक स्टिग्मा हट जाता है. मेरा Yeah. पर्सनली ख्याल है कि आप एक बार
अगर आप उस वक्त फेल भी हो जाओ तो फिर भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं No, by the way. but you have learnings. या एग्जैक्टली तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप उस टाइम पे सक्सेस या फेलियर लाइक किसी भी टाइम पे लाइक व्हेनेवर यू स्टार्ट ऑफ समथिंग इट्स जस्ट हाउ यू फील बट टीनेज में आप ना एनर्जी बहुत होती है यू जस्ट पिक योरसेल्फ अप एंड बैक यार अच्छा सही है फिर से कर लेते हैं व्हाटएवर यू कैन डू समथिंग एल्स बट नॉट एवरीवन इज दिस एंटरप्राइजिंग दो हम कितने थे यार 1000 लोगों के बैच में क्या 10 लोगों की कमेटी होती थी या 15 की 20 की जो मेन पोजीशंस होल्डर थे यार डायरेक्टर सिक्योरिटी और उनकी बात नहीं मैं कर रहा लेकिन लाइक जो कमेटी हेड्स होते थे और जो तो मतलब कहने का मकसद ये कि हर बंदा नहीं होता ठीक है तो फिट है वो क्या करें बेचारे वो क्या एक्सपेरिमेंट करें इसको क्या व्हाट डू यू थिंक दे शुड डू MUNs का क्या फ़ायदा हुआ ना उस टाइम पे अगर कोई मेरे से पूछता ना कि आपने ये MUN कर लिया आपने चेयर कर लिया आपको क्या मतलब आपको क्या फ़ायदा हुआ है ना you've just wasted your time you could have studied you could have aimed for distinctions but the thing is Hamza it's made me who I am so it's polished my skills to be able to have a decent conversation without losing ground or without losing control of my emotions and having the ability to absorb difference of opinions. Yeah. So it's very important That's true. that you let yourself through that journey and you know pick your learning points from those experiences. And just give your energy, जितनी ज़्यादा energy है, just give it into as many directions as possible. यार होता असल में ये है कि even MUNs के अंदर अब तो पता नहीं आजकल क्या होता है मुझे तो I'm too out of touch although I'm in school but I think वो for Olympics वगैरह चीज़ें अभी तक हो रही हैं that's from जो अभी तक है but I think debating आपको ये भी सिखाता है यार public speaking there's so many people who are looking at you and थोड़ा सा ये भी होता है कि आप current affairs के बारे में you have to now read up on it or गूगल इट उस ज़माने में तो खैर इतना सीन नहीं था खैर मुझे नहीं पता बट मैं नहीं किसी कमेटी में जाता था मेरा काम ही बाहर होता था तो बट करंट अफेयर्स फलाना ये वो डिफरेंट गवर्नमेंट्स के अंदर बीच में क्या चल रहा है एंड देन आई विटनेस्ड कुछ बहुत अच्छी डिबेट्स ड्यूरिंग दैट जो सीरियस लोग होते थे दे वर इम्प्रेसिव इवन एट दैट टाइम एंड आई थिंक दे वेंट ऑन टू बिकम लॉयर्स और उनको भी समझ आ गई थी कि ब्रो कोई है सीन हमें एंड देन वी आर गोना टेक इट समवेयर तो आई थिंक वो तो है अच्छा फिर उसके बाद ही स्कूल ख़त्म हो गया Unfortunately, Hamza, हमारा स्कूल ख़त्म हो गया we were done with our ONA levels and then life had to happen. Life happened. तो क्या जी आपकी लाइफ सुना है कोई यूनिवर्सिटी में गुजरी है कौन सी यूनिवर्सिटी आपने So I went to NUST. Okay. And then I did my BBA honors from NUST Business School. Okay. And I majored in finance and investments. How's the experience at NUST? I mean वो थोड़ा सा obviously है थोड़ा constricting है थोड़ा मतलब इतना आसान नहीं है हाँ नहीं सही है जो है वो है हाँ वो obviously तो वो कैसा रहा I mean because I think Beacon House में ज़्यादा थोड़ी liberties थी in comparison to when you a lot of people जो तुम्हारे साथ के batchmates के हैं तो वो कैसा था like Okay so in all honesty Hamza I have this polarity to myself so I'm a very free soul okay like you said like you know carefree okay and throwing caution to the wind but at the same time I'm a free soul but at the same time I'm a very very regimented human okay I know these are like two things that are at the two different ends of a spectrum quite recently मैंने भी ऐसा feel करना शुरू कर दिया by the way okay so you understand what I'm saying right yes and so the discipline at NUST was very much in sync with me being regimented about my life okay so you know it never crawled under my skin made complete sense to me आपको इस टाइम पे क्लास में होना चाहिए और ये आपका उस उम्र में नहीं था मैं ऐसा भाई उस उम्र में तो मैं ना चाहता मैं छोड़ देता कसम से मैंने पेपर ही नहीं दिया literally yeah because you thought it's too yeah I just thought कि ये too much discipline I wanted to go to LUMS नहीं हुआ ठीक है yeah. and उसके बाद NUST का मैंने वो जमा कराए थे 1000-2000 रुपये जो भी होते
वहाँ मैं गया ही नहीं, मैंने कहा ये नहीं कर सकता मैं, क्योंकि people are starting, yeah. Exactly. So, that's what I'm saying. So you knew that, it's not for you. But, Yeah. when I went over there, I was like, fish यही है. in the pond. Okay. I was like, I am good. अच्छी I adaptability need है. discipline. And discipline it sets well with me. Okay. Hence the new Farah that I see here in front of me. Great. अच्छा ठीक है, तो वहाँ से आपकी थोड़ी सी regimented approach to life. I think obviously academically you were good, above average. I don't know what your grades were, ठीक है, but वो भी चाहिए होता है. अगर आप academically sound है तो आप regimented है. That's very simple. वो तो हो ही नहीं सकता उसके बगैर, जितना मैं नहीं कर सकता था. ठीक है, तो I was like a 5A 1A 2B student. सही है, so I was like right above the वो. तो खैर उसके बाद जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई आपकी, सही है, तो what plans did you have, like right out of university? अब आपने नौकरी शौकरी करनी है या कुछ सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो किधर गई आप? So the regimented person that I am, so I defended my thesis in my undergrad on 3rd August. And so on 5th August, I joined the private company. So, right after graduation, which is आपने 3rd को अपना defense दिया thesis का, 5th को आपने नौकरी join कर लिया. 5th August के बाद 15th October को मैंने अपने CSS के papers जमा करा दिए. माशाल्लाह. कि, I plan to sit for these exams. Why though? Like, why? So for me, CSS was never an option, right? Not just कि वो उसमें पढ़ना पड़ता है, but like बहुत constricting है for me, ठीक है. एंड मुझे लगता है कि ठीक है, यू कैन लाइक आप इम्पैक्ट डाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मे बी आप कर भी सकते हो, बट थोड़ा सा ऑब्वियसली गवर्नमेंट सर्विस का ये होता है सीन कि यू हैव टू, या आप उनके रंग में ढल जाओ, ठीक है, या आउटकास्ट बन जाओ. वो वाले एटीट्यूड से मुझे मसला था. दूसरा मसला था कि यार ये हार्ड एरियाज, ये वो फलाना, पैसे वैसे भी कोई नहीं खास. तो it was never an option for me, essentially. And I didn't think a lot of people from the bubble that I come from, hamara bubble gelo, whatever, would opt for it. But then I saw a lot of people going there. So मेरे लिए हमेशा ये question ही रहा है, क्यों? I think, Hamza, I can't answer the question for like everybody, but I can tell you what my thought process was. Okay. I was repeatedly, time and again in my life, asked to appear for these exams. As a child as well, you should appear for these exams. Okay. So, this is something that, I'm going to put out here. Do not put ideas in kids' Into heads. your children? Yes, let them just like be. Because see, it was planted over there over time by different people. And so, then my mind fixated on it. And I was like, I want to do this because a lot of people are telling me that this is something worth doing. And then, this was around January when you sit for the exam. So October mein aapne application di, January mein exams hue, and the result comes out in autumn, winter again. Okay. Again, maybe November. ठंड थी, मुझे ये याद है. ठीक है, इस टाइम पे कहीं रिजल्ट आया था, रिटन का रिजल्ट आया था. And I'm sitting in a meeting room, and I'm having a meeting, and so one of my NUST class fellows comes running, opens the meeting room up, and goes like, Farah, your name is on the list. And मुझे ना पता भी नहीं है कि क्या बात. So I said, listen, कौन सी लिस्ट? मैंने कहा कोई इंटरनल लिस्ट है इसकी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की. She's like, your name is on the CSS result. I was so embarrassed. Hamza, I have never been more embarrassed in my life. क्योंकि उस मीटिंग रूम में मेरे कुछ bosses थे, and I was like, that is not me, and you have embarrassed me like anything. Somebody else's name is exactly the same as mine. और अब मतलब this is so embarrassing कि अब मैं थोड़ी देर बाद इनको आके बताऊंगी कि वो किसी और का रोल नंबर था. ठीक है. So my boss was like, no. I said, sir, abhi let's get done with the meeting and then I'll check. So he said, no, you go right now and you check. No, I said, I don't have my roll number. So he said, call home and get your roll number. So I called home, and as serious as I was about the process, जब मुझे नहीं पता मेरा रोल नंबर कहाँ पड़ा हुआ है, तो मेरे घर वालों को क्या पता होगा. ठीक है. Anyways, तो मेरा रोल नंबर नहीं था मेरे पास. And अब आधा घंटा गुजर गया है, and एक fiasco है, and ना इधर काम हो रहा है ऑफिस में. So they're like, अपना ID कार्ड पकड़ो
and go to FPSC and, get us a final verdict. Yeah. We need to know whether we're celebrating or not. Everyone is curious right now. Oof, ठीक है? Yeah. And then this is now spread now to the whole floor. And again, I am like, ये ज़मीन खुले और मैं बीच में उतर जाऊँ क्योंकि ये मैं तो नहीं हूँ. So I take my ID card and a colleague of mine drives me to FPSC. कि ये ना हो कि ये जाए ना. So I go in and वहाँ पे director बैठे हुए थे. So I submitted to him कि sir, this is my ID card number. And so the documents are at home. My home is a little far. My office colleagues want to know whether it's me or not. So if you could just check from my ID card whether it's me. So पहले तो उन्होंने मुझे बिठा के पूरा लेक्चर दिया. उन्होंने कहा कि आप जैसे irresponsible बच्चे होते हैं. Thank you so much. अच्छा एक बूमर वो भी मिल गया तो मैंने इस लेक्चर भी मिला. हाँ कि आप जैसे irresponsible बच्चे होते हैं, एग्जाम में बैठ जाते हैं, कुछ पता नहीं होता है, मतलब ये चीज़ें घुमाने वाली होती हैं, ये चीज़ें संभाल के रख. मैंने कहा सर संभाला हुआ होगा बट अभी my family can't find it for me because मैंने संभाला हुआ है. And मुझे frankly नहीं पता कि मैंने कहाँ संभाला हुआ है. I didn't say that. Anyway, so उन्होंने मुझे थोड़ा probably आप थके हुए होते हो ना. उन्होंने CSS का रिजल्ट कंपाइल किया हुआ था, probably very long nights, and he was like यार ये अब दिमाग खाने आ गई. Anyways, उन्होंने सीक्रेसी में मेरा ID कार्ड भेजा. सीक्रेसी के डिपार्टमेंट में कि बताएं कि ये रोल नंबर क्या है. ताकि हम चेक कर लें. हाँ, इस ID कार्ड पे रोल नंबर कौन सा इशू हुआ था. सो दे बॉट वो तो ID कार्ड पे वो लेकर तो आए रोल नंबर. साथ में वो ये भी क्या किया है कि सर मैडम ने क्लियर कर लिया है. इट्स हर ऑन द लिस्ट. ओह माय गॉड, यू शुड हैव सीन द 180 डिग्री फ्लिप. आई कहते हैं मुझे हमेशा से पता था. I was like, हमेशा से? Okay, really? But it was a very cute response, I would say. But he felt way more happy for me than I was in that moment. He was really happy कि, okay, you came here to check. Yeah. And it's, you've hit the jackpot. मिठाई बांटे. Yes, you've hit the jackpot. So I went back to my office. I told them. And then, it started becoming a reality. I mean, it's a lengthy process. I don't know if you want to ask questions on that or not, but this was how I initially landed into the stream of CSS. Okay. Yeah. अच्छा तो अब ये आपकी ज़िंदगी में अब आ गया, फिट हो गया. उसके बाद आई थिंक इंटरव्यू होता है. सही है. एक बड़ा डेडली किस्म का. So interview से भी पहले there's a step called psychological. There are psychological tests involved in that, so you give those tests. Some are individual, some are in group settings, so that they learn how you behave in a group setting. How do you work with people? How do you think about a problem? How do you approach a problem? Your confidence, whether you're a leader, whether you're more of a team player, because वो आपकी एक profile बना रहे होते हैं. They're making a character sketch Much like of the you. army. More or less, yes. So once you're done with the psychological, then is your interview. And then when the interview happens, uske baad, then there is the intelligence clearance. Okay. There are a lot of... उसमें क्या होता है? डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं, क्या बातें होती हैं? I think it's an important step because you are entrusted with the state information and secrets. So, they need to do their due diligence. मेरा ये सवाल है कि मतलब लुकिंग तुम अब इस सिस्टम में से सारा गुजरी हो, ठीक है, और अनबायस्ड अनगवर्नमेंट पर्सन हो के कितना एक इफेक्टिव सिस्टम है ये. लाइक ये भी तो हो रहा है ना इसी सारे चक्कर के बीच में. इतनी इंटेलिजेंस क्लियरेंस और इतने सब कुछ के बावजूद भी वी हैव डॉक्टर्स हु आर वर्किंग इन फाइनेंस एंड फाइनेंस पीपल वर्किंग इन अदर प्लेसेस एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, लाइक पीछे से प्रोफेशन कुछ और है, वो हेल्थ में घुसे हुए हैं, सो ऑन सो फोर्थ. Do you think it can be improved or not? Or do you think it's perfect? I think everything can be improved, Yeah, obviously. Hamza. Everything has space for improvement. One thing that I can say with a surety is that it's a very merit-based system. I think one of the few merit-based systems that have survived the test of times in Pakistan. Okay. So, the merit is intact.
that's very much there. Having said that, there are so many things that we should experiment with. I'm all up for experimentation, like I said, because that's the only way you'd know whether it's a hit or a miss, and क्या चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं रिक्रूटमेंट में और क्या चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं. So I think what you're trying to say is a lot of doctors end up being police officers, maybe, Yes. for example. Yeah. ठीक है. Yeah. So the thing is, I'll tell you उसका रीज़न क्या है हमजा. उसका रीज़न ये है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, they're in the habit of sitting for very long hours and studying and cramming information. तो वही ना, ठीक है. वही तो देखो फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना. अब जैसा मैं तो मैं तो थोड़ा रेडिकल बंदा हूँ. मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट पूरी को एज अ बिजनेस चलाना चाहिए. ठीक है. ठीक है. I am on that with you. Yeah. I'm absolutely on So, that with you. उस सिनेरियो में ठीक है, आप काबिल बंदे लेके आए. ठीक है, उनकी बिल्कुल जैसा नौकरी किसी टेलको की होती है, किसी एमएनपी की, जिसकी भी, ठीक है, उसी तरह के पर्क्स भी अच्छे हों, फिट है, लेकिन यार निकाल सकते हैं. ठीक है, ये ओएसडी वाला चक्कर और ये वाला मसला और ये वो, दिस इज जस्ट इनएफिशिएंसी, राइट. और हमें पता है, और हमने अब ये 70 साल एक्सपेरिमेंट करके भी देख लिया ना. सो यू कांट से कि यार ओ अब ठीक हो जाएंगे. सही है. देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर आर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इनसाइड द सिस्टम बिकॉज ऑफ दीज प्रोसेसेस एज वेल. एंड प्लस ऊपर पॉलिटिकल हायरिंग्स हैं. ठीक है, तो जब आप जो हो वो फॉर एग्जांपल आप एक कैबिनेट में एक फाइनेंस मिनिस्टर लगाते हो. सही है, वो कैबिनेट में सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको एक्स वोट्स पड़े, उसका कोई अंडरस्टैंडिंग हो ना हो फाइनेंस मिनिस्ट्री की. इवन राइट नाउ इन द गवर्नमेंट यू सी पीपल डूइंग सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट्स विद अदर पार्टी मेंबर्स, क्योंकि हैं ही तो 3-4 बंदे मेरा ख्याल है फाइनेंस के. एक शौकत तरीन है, एक जो मिफ्ता इस्माइल तो न्यू फेस है, एंड डार. एसेंशली यू हैव लाइक 2-3 पीपल. सही है. एंड बाहर से आप बंदे ला ही नहीं सकते, वो फाइनेंस मिनिस्टर बन ही नहीं सकते. वो तो इस दफ़ा ऐसे पीएम वाला चक्कर लगा के कुछ थोड़े बहुत काबिल बंदे आए, लेकिन आई थिंक फंडामेंटली दैट्स अ प्रॉब्लम. राइट पर्सन, राइट जॉब, और विद अकाउंटेबिलिटी इज जस्ट नॉट कि उनको नाब के चक्कर के दफ्तर के चक्कर लगवाने. अकाउंटेबिलिटी ये भी है कि दैट यूल बी किक्ड आउट. इफ़ यू नॉट एफिशिएंट ब्रो, यू आर किक्ड आउट. इट्स वेरी सिंपल. आई मीन, इसको अब तो जागीरदारी बना ली है ना लोगों ने. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Let's break this down because थोड़े इसमें multiple facets हैं. Yeah. So the first one is the political one that you talked about. So the thing is, that is not my domain. Like, Okay. वहाँ पे कौन अपॉइंट हो रहा है, क्या हो रहा है, वहाँ पे नहीं, किस but तरह we're not just talking about you as capabilities build हो रही हैं to be a minister, and Yeah. how many options do we have, and that I am absolutely nobody, and I don't matter when this question is there, and I can't have an opinion on it, to be honest. I can have an opinion on how well trained bureaucrats are to handle the postings that they're given. But you're also a citizen of Pakistan, right? You're also a voter. You're also I mean, I'm not saying कि political affiliations नहीं हो सकती, but you can think of some people as good, some people as bad, some people as like, some people as not like, whatever. I mean, why do we need to take out the human out of it, right? हर बंदा इंसान है, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कोई अच्छा काम करे, कोई बुरा. उसको अगर आप नहीं कहोगे कि यार there is a problem of expertise in this country that we know of, that we all experience, like when you go to certain places, जब आपका गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक पड़ता है, तो यार you see that. तो इसको गलत या सही ना कहना, I mean, I don't know. Are you not a citizen? No. I didn't mean it in that way. What I was trying to say was that I cannot judge the competency. Okay. Because I'll tell you why. Reason being, because we first have to understand that policies are only going to bear results in the long term. Yes. आपको कोई भी चीज़ 2 दिन में रिजल्ट नहीं दिखाएगी. बिल्कुल. Now, having said that, वो पॉलिसी कितने अरसे चली, and then उसका आपने post analysis किया या नहीं किया is going to tell you whether it worked or it didn't work. Yes. उससे पहले having an opinion is just like throwing darts in the dark. Yeah. Basically कि ये चलेगा, ये नहीं चलेगा. It's and that's very irresponsible, I would say, if somebody does that. So I think हर चीज़ का एक post analysis होना चाहिए, and it should be a learning point for everybody.
For you, जो for me, for everyone. जो टीवी पे सारा वक्त पोस्ट एनालिसिस ही चल रहा होता है But essentially. देखो ना वो I'll again say this कि वो post analysis नहीं है. देखो post analysis needs a lot of data, Yeah. a lot of serious minds who research a certain aspect of how a policy unfolded and उसके impacts क्या थे. अभी जिस तरह तुम और मैं बात कर रहे हैं, डू यू इट्स नॉट फेयर हमजा, इट्स नॉट फेयर कि आप परसेप्शंस बिल्ड कर लें विदाउट एनी सॉलिड एनालिसिस और डेटा क्रंचिंग दैट यू माइट हैव डन ऑन यार दोज ना. यार लेकिन वही वाली बात है ना, वी लिव इन अ फ्री कंट्री. सही है. अब No, मैं no, तुम्हें अब मैं तुम्हें समझाता हूँ. सही है. जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं बीइंग अ नॉन गवर्नमेंट पर्सन मैं तो क्रिटिसाइज कर सकता हूँ. ठीक है. अगर इम्मी की पॉलिसी थी ऑफ गिविंग 460 बिलियन रुपीज एज क्या नाम है एज सब्सिडी. ठीक है. ओवर व्हाटएवर ये जो पेट्रोल वाला सारा सिचुएशन थी फैस्को था, आपको ब्लेटेंटली नज़र आ रहा है कि दैट्स गोना deplete your reserves and that's going to create a problem, which it did. And you will obviously have to not, you can't wait for like अब 5 साल हम वेट करेंगे फिर हम देखेंगे कि यार इसमें से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ कितने लोगों को नहीं फ़ायदा. इट्स ब्लेटेंट ये ज़्यादती थी मुल्क के साथ जो की है उसने. सही है. जो कॉल आउट करनी चाहिए, क्योंकि आप यही मसला आ रहा है ना कि मसीहा बनाते जा रहे हैं. आप एक पार्टी एक को, दूसरी पार्टी दूसरे को, तीसरी पार्टी तीसरे को, और कोई भी आपस में अपने ही लीडर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता. ये रूल्स ऑफ द गेम है. एंड दिस इज ट्रू विद एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट द गवर्नमेंट हैज़ एज वेल. द गवर्नमेंट के अपने बंदे जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या इवन आई थिंक ग्रॉस डिपार्टमेंट भी काम करते हैं, दे कांट क्रिटिसाइज देयर ओन गवर्नमेंट. अगर क्रिटिसिज्म और You ओपन will be surprised. Hamza, you will be surprised. It's very different in bureaucracy. Criticism is healthy, and when it's not healthy, it's very lethal, and people use it left, right, and center to even take take a hit where they shouldn't have. So, dekho, from bureaucracy's perspective, we are all about bringing everybody, the stakeholders together, and brainstorming and making recommendations. For us, criticism is a very part and parcel and a very core ingredient to the whole process. I have the ability to write something on the file, and my boss has the ability to completely give a different bent of mind, and maybe his boss might go into a completely third direction. So there are 3 opinions on the file, and then one decision will override the others. Yeah, yeah, yeah. yeah, So obviously. so it's a very, it has its pros as well. The hierarchies are there so that input is taken on board, and then you take a decision कि आपने करना है या नहीं करना है, what is your sixth sense saying, what is your experience saying. Because if I'm in 18 right now, जो 21 में है, he's or she has been there, done that many times, seen things fall flat on their face, and I am still maybe in the theoretical phase. Yeah. So it's I think the bureaucracy has a saner and not a very shabby or a very shaky process of decision making. I think it's a very responsible and a very time consuming and cumbersome process. इतना सोचते हैं कि वो थोड़ा cumbersome भी हो जाता है. देखो रेड टेप का जो प्रॉब्लम है ना, सही है, वो स्लो डाउन करता है प्रोसेसेस को. ठीक है. बिकॉज ऑफ दीज हायरार्कीज एंड ऑल ऑफ दैट सिचुएशन, इवन अ वेरी स्मॉल डिसीजन विल टेक अ लॉन्ग टाइम. सही है. that's the case with the judiciary as well. हमसे cases, एक तो खैर judiciary पास तो खैर बंदे भी काम है, तो I don't really blame them for anything, but there is always those layers that really जिसे कहते हैं कि reduce efficiency in the system. ठीक है. अगर मैंने बिजनेस खोलना है यार,
तो भाई मुझे पहले SCCP के दफ्तर जाना है, फिर मुझे FBR से भी बातें करनी है, फिर मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। उससे बेहतर नहीं कि मैं जाके एक प्लॉट ले लूँ, सही है, और मैं इजी ज़िंदगी बस थोड़े से पैसे दे के तो मैं उसमें से बिजनेस निकाल लूँगा, बस इजी सीन है। But Hamza, then that is your social fabric. और आपका social fabric है ही ये, ठीक है? Look around. हाँ, लेकिन प्रोसेसेस And तो तेज़ हो सकते हैं ना यार, क्या कह रही no, है, no, ऐसे no, तो no, ना no. करो What I'm यार। trying to say is कि it's not about the processes only. It's about how your society is hardwired. So your society, on the large, is not um, willing to have that patience जो कि investments को required होता है to give you returns. ठीक है, तो इसलिए वो process की वजह से again we need to research on this, but I think process might be adding on to that social fabric that we have, but we have a penchant for shortcuts and let's make quick bucks jaldi se जिस भी industry में आपको returns अच्छे मिल रहे हैं. It's a capitalist society, यार right? देखो उस So इंडस्ट्री में अच्छे रिटर्न्स इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप उनको टैक्स हेवन्स देते हैं, सही है, मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे क्यों अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। वहाँ पे टैक्सेशन कम है ओवरऑल, ठीक है, अगर आप रियल एस्टेट टैक्सेशन की बात करें, सही है, तो उसके अंदर वो कम है। एंड मी बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, व्हाटएवर स्कूल, मुझे एक X% के ऊपर पहले से चार्ज हो जाता है, मेरे बैंक में हिट करने से पहले आ जाता है कि भाई जान आधी दे दें, ये कर दें, वो कर दें, जो भी। मैं तो ये भी क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे लॉस हुआ है, मुझे उससे पहले रेवेन्यू पे पड़ जाता है। बात ये तो जब जाहिर है, अगर मेरे पास सपोज करो 2 करोड़ में, मैं जाके 2 फाइलें ले सकता हूँ बैरिया की, सही है, और उनको क्या नाम है वर्ड, मैं उनको 1-2 साल के लिए रखूँ, वो 2 करोड़ 4 करोड़ हो जाएंगे, फिर मैं 4 करोड़ की और फाइलें ले लूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। और दूसरी तरफ, और इस पर कितनी जॉब्स बनी, 1 या 2 रियल एस्टेट एजेंट बन गए होंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ, सही, क्योंकि एक डेड पीस ऑफ लैंड सिर्फ टाइम से लेके आए, एंड एवरीवन इज डूइंग रियल एस्टेट, कूडोस टू देम, व्हाटएवर, सही है। नेक्स्ट स्टेप पे मैं एक बिजनेस सेटअप करना चाह रहा हूँ, और बिजनेस सेटअप करने के लिए मैं जॉब ज़्यादा क्रिएट करूँगा। अगर मैं इस वक्त 80 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे के बैठा हूँ, तो मैं ज़्यादा लोगों को टैक्स भी दूंगा, टैक्स भी आपके मुल्क में ज़्यादा आएगा, खुशहाली आएगी, सब कुछ होगा। लेकिन मैं टैक्स देता हूँ उसके ऊपर, मेरे पे दुनिया जहाँ के उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, ये है, वो है, फलाना है, तो भाई मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटे कि मैं इतनी ख्वारी करूँगा, ठीक है, टू गेट ऑलमोस्ट द सेम रिटर्न्स, और मे बी थोड़े से ज़्यादा होंगे। so देखो इस पे I have a very very different take on this, and a lot of people might not agree with me. वो कहेंगे कि ये बहन जी कहीं और ही चली गई हैं, but I mean I'm allowed to have my own opinion. Yes. I believe that states can no longer be market fixers. I think state now needs to be entrepreneurial, like you said, needs to be run like a business. बिल्कुल। So when the state is entrepreneurial, so it takes risks, and then with the risks are good returns. And so my approach towards this is कि आपको अपने पूरे state functioning को alter करना पड़ेगा towards being more entrepreneurial, towards being more risk taking and creating markets. So I don't think that states should be now in the market fixing or market correcting phase. लेकिन They वो- need to be in the market creating phase. Yes, that's ठीक है? true, but वो कर तो नहीं रहे ना। हाँ नहीं कर. So this is what you and I are dreaming right Yeah, now yeah. for. ठीक है? So this is our desire. This is our dream. This is maybe the destiny that we want for our country, and that is that the state needs to start looking towards the future. Example देती हूँ. So you look at the iPhone and you see that they've used touch, and you see that they basically thrive on internet. And Apple का बहुत नाम है. But the touch technology was funded by the US government. It was a US government's project. The US government also funded the internet. So they have picked up on this, and they are an entrepreneurial state. Yeah.
yes, businesses are they're riding on what the state is creating, and then they're making profits. Profits are not bad. More profits mean more tax revenues Yeah. eventually. ठीक है, so हमें क्या मिलेगा मार्केट क्रिएट करके? हमें टैक्सेस मिलेंगे ना, when the business thrives on the innovation that you're supporting and that you're giving the ground to flourish in. आपका जो अब जो प्राइवेट फाइनेंस है वो भी क्विक रिटर्न्स की तरफ टिल्ट हो गया है ग्लोबली. Now states need to pick that weight up of innovation, of entrepreneurship, and make it part of their fabric, their own fabric. So states now need to be entrepreneurial. And so when I was doing my masters from the UK, one of my professors gave such a beautiful concept to explain this. Her name is Carlotta Perez. She said कि जो हमारे एक दो generations पहले जो elders थे, वो जो रेफ्रिजरेटर्स यूज करते थे, वो रेफ्रिजरेटर्स अभी भी गैराज में फुली फंक्शनल फॉर्म में पड़े हुए हैं और चल रहे हैं. So they're 100 years old, or maybe even more than that, and वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं. And जो हमारे appliances हैं वो हर 2 साल बाद कभी she said कि they'll start having problems with their exterior. हमारे पाकिस्तान में क्या सबसे common problem आ रहा है, रबर ख़राब हो जाती है फ्रिज की ना. फिर फ्रिज बंद नहीं होता, फिर रबर ढूंढो. So she said कि it's very important for the governments or the state to now transform consumption and production. And she explained that by saying कि आपको जो आपने पूरा लेबर फोर्स लोड किया हुआ है प्रोडक्शन के ऊपर, वो आप प्रोडक्शन से हटाएं. So start creating things the way they were. वो 100 साल चलती हैं कम अज़ कम. And move your labor force, जिसको of course गवर्नमेंट का एक ही काम भी है ना, उसने जॉब्स देनी है, उसने लाइवलीहुड सिक्योर करना है लोगों का. Move them towards services, which is after sale services. तो वो जितनी दफ़ा उसको रिपेयर चाहिए in the 100 years is where the person makes his income, instead of making shabby refrigerators which break down, which cause pollution, which do damage to the planet, and eventually the person takes the same amount of salary home जो कि वो after sale services में भी घर लेके जा सकता था. लेकिन देखो वो तो ये तो यूरोपियन वर्ल्ड की कहानियां हैं. बट ये यूटोपियन नहीं है ना. देखो, we have to start talking about these things somewhere. देखो जहाँ तक तुम कह रही हो स्टेट नीड्स टू बी एंटरप्रेन्योरियल, you have great examples in UAE, you have great examples in क्या नाम है, कतर as well. ठीक है, दोनों के दोनों एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से ही चलते हैं और वो ब्रिलियंट मॉडल्स हैं इस रीजन में. सिक्योरिटी भी है, बिजनेस भी है, सब कुछ है. बट देन अगेन वही वाली बात है ना कि सिस्टम्स जो उनके एग्जिस्ट कह रहे हैं ना, लाइक जो उनके मतलब यार 3 चीज़ें आप अगर दे देना सही है एक इवन पाकिस्तान को राइट नाउ, तो आपका मुल्क जो है वो किसी ना किसी साइड पे चलना शुरू हो जाएगा. एंड दैट्स बेसिकली सिक्योरिटी इन लाइफ, वेल्थ एंड कॉन्ट्रैक्ट्स. सही है, ये 3 चीज़ें अगर आप इधर भी प्रोवाइड कर देना तो आपका काफ़ी गेम उठ सकती है. लेकिन वो तीनों चीज़ें नहीं आएंगी, और क्योंकि उसके बीच में बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट और ये वाले सारे लोग बैठे हुए हैं जो ऑब्वियसली इस चीज़ की जागीरदारी लेते हैं. एंड ठीक है यार, आप इतने फंडिंग लेते हो सारे, ये वो सब कुछ फिट है, ये तो इंश्योर कर दो ना. ये 3 चीज़ें इंश्योर कर दो, बाकी लोग तो तुमसे कुछ वैसे भी नहीं मांग रहे खास, ठीक है ना दे रहे, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, तो बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल. सो आई मीन दिस इज़ अ साइक्लिकल सॉर्ट ऑफ अ डिबेट. ठीक है. और अच्छा, इसमें एक पॉइंट आई वुड से इज़ वी कहते हैं कि बीच में ब्यूरोक्रेसी आ गई है, ये हो गया है. सो द थिंग इज़, look at the population of this country, Hamza. Look at the load that this state is carrying on its back, and it's increasing with each passing day. आपकी कंट्री के पास अगर 100 रुपया है और आपका जो रियल एक्सपेंस है या जो
बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी करने के लिए, उस पर 200 लगेंगे. स्टेट 100 रुपया 200 में किस तरह पूरा करेगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट. एग्जाम्पल देती हूँ. अगर इट्स अ बेड इन अ हॉस्पिटल एंड उस बेड की लाइफ 10 years है, उसके बाद वो डिप्रिशिएट करके फारिग हो जाएगा. ठीक है, वो डिप्रिसिएशन उसकी और उसकी लाइफ कैलकुलेट हुई थी 1 person एट अ टाइम के लिए. ठीक है, आपकी पॉपुलेशन इतनी है और आपका डॉक्टर इतना परेशान है कि वो इन लोगों को वापस घर नहीं भेजना देना चाहता कि ये दे प्रॉब्ली पास अवे इफ दे आर नॉट अटेंडेड टू. तो वो एक बेड पे 2 या 3 भी अकोमोडेट कर देता है. वही एसेट आपका बहुत जल्दी डिटीरियोरेट करके डैमेज हो जाता है. आपने अपनी प्लानिंग फ्यूचर परचेजेस के लिए उस हिसाब से नहीं की हुई होती. ठीक है, आपने अपने बजट्स लेके चलने होते हैं ना. अब मैंने बहुत बेसिक सा एग्जांपल दिया है टू मेक इट लाइक इजियर फॉर मेरा एवरीबॉडी टू एक सवाल है. अंडरस्टैंड देखो कि ये चीज़ें बहुत आसान हैं. किसी को मतलब वो कह देना कि यू नो ये कुछ नहीं कर रहे. इट्स वेरी डिफिकल्ट. इट्स वन ऑफ माई mentors shared something, and it read like हमारे सिस्टम को चलाना इज बेसिकली जहन्नम में एयर कंडीशनिंग का ठेका. ओके, क्या बात. ठीक है. इट्स I don't think it could have been वाह. more aptly put. Okay, I like the other perspective. Okay, मैं पहली दफा सुन रहा हूँ. Okay, It's difficult. It is difficult. Nobody has it easy. पहली बात ये समझो. सही है. देखो, हम ये यहाँ पे ये डिबेट नहीं है कि क्या नाम है, हम जी फिट है, पैसे कम हैं, रिसोर्सेज का मसला ये हर बंदे को है भाई. हम भी एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इन्हीं स्केर्स रिसोर्सेज और इन्हीं सब के अंदर से गुजर के जा रहे होते हैं. द ओनली थिंग दैट वी एक्चुअली डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट इज अ लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट. ठीक है. अब जब हम एज बीइंग टैक्स पेयर्स, ठीक है, जाते हैं, अब मैं इस जगह पे तुम आई हो, सही है, आई पे फॉर द इलेक्ट्रिसिटी लाइक इन द बिल एज वेल, एंड आई आल्सो हैव अ जनरेटर. सही है, जिसने उसको बैकअप पावर देनी. ठीक है. यहाँ पे सैनिटेशन नहीं है तो वो मुझे खुद करवाना है. मैं सड़क का कचरा खुद उठवाता हूँ. सही है. अभी रुक जाओ जरा. पानी यहाँ पे नहीं है, मुझे बोरिंग करवाई हुई है. सही है. इसके बाद गैस यहाँ पे नहीं है तो मैंने LPG लगाई हुई है. अभी थोड़ी देर से मैं यहाँ सोलर लगवाना चाहता हूँ. सो बेसिकली आई कैन बी ऑफ द ग्रिड बट आई पे ऑल द टैक्सेस. दैट्स द प्रॉब्लम. अब मैंने जब क्या नाम है, इम्मी के पोर्टल के ऊपर मैंने मैसेज किया कि यार देखो ये कंप्लेंट डाली. ठीक है. तो उसने कहा कि यार यू कम अंडर सम प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी एंड व्हाटएवर दैट, वो कोई है ही नहीं यहाँ पे, ये गाँव है. सही है. तो आप उनसे जाके गए. मैंने कहा यहाँ पे तो कोई है ही नहीं. तो उसने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते. सही है. अब सो ऑल ऑफ द पीपल हु आर पेइंग टैक्सेस, एंड आई पे अ लॉट ऑफ टैक्स बाय द वे, ठीक, तो मुझे वो सर्विसेज नहीं मिलेंगी ना, मैं भी फिर कोई कांचा लगाने की कोशिश करूंगा. एथिकली नहीं लगाता, वो एक अलग बात है. सही है. कहने का मकसद ये है, इस पूरी जो तमहीद का मकसद ये है, देखो वी ऑल नो दैट पाकिस्तान हैज़ अ प्रॉब्लम इन कि हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं है. ठीक है. तो द प्रॉब्लम इज नॉट कि खर्चे कम करें या वट एवर, द प्रॉब्लम इज अ रेवेन्यू प्रॉब्लम. फर्स्टली आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ रेवेन्यू प्रॉब्लम. रेवेन्यू प्रॉब्लम के अंदर जो इदारे हमें सपोर्ट कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स द SECP, विच इंक्लूड्स FBR, विच इंक्लूड्स ऑल ऑफ दिस, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो हमें नहीं हेल्प करते कि किस तरह फिर और रेवेन्यू आएगा. फ्रीलांसर अकाउंट नहीं खुलवा सकता. सही है. तो वो किस तरह रेवेन्यू लेके आएगा. सारे कोशिश कर रहे हैं कि जी डॉलर में पैसे बाहर पड़े रहे, इस वक्त सब अपने पैसे डॉलरों में कन्वर्ट कर रहे हैं. यू आर क्रिएटिंग दैट प्रॉब्लम एंड देन यू आर ऑल्सो एडिंग टैक्सेस ऑन इट. अभी कल परसों FBR का टैक्स सोलर पे भी आ रहा है, सो ऑन सो फोर्थ. ब्रो ये तो दिस इज लाइक सोने पे सुहागा ना. वही जो आप एयर कंडीशन जहन्नम में चाह रहे हैं, मुझे लगता है आप एक और आग लगाते हैं जहन्नम में एक्स्ट्रा, कि थोड़ी कम गर्मी है, थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं. सही है. I respect your opinion. Thank you so much. I think, and I take it in good stride, we need to co-create. I think that's the way forward.
अब मतलब बैशिंग और इन चीज़ों का कोई फ़ायदा कोई नहीं होता. फ़ायदा आपको ना फिगर आउट करना होता है. इट्स नॉट वर्किंग, लेट्स सी what else can we do. And I Yeah. think co-creating solutions is important. Taking stakeholders on board is very important. Um, maybe there can be some focus groups where people like you, and there should be vicinities. It should be like grassroots level up. It should not be top bottom. Top bottom से तो फिर ideas बस impose होंगे ना. Yeah, नीचे से हाँ, genuine I issue agree. and then the real understanding Yeah. of what the issues a common man is facing Yeah. in terms of managing their life Yeah. and interacting with the government or the state at multiple interaction points. And now देखो, you told about kachra, you told about water, you told about gas, you told about electricity. और मैं इस्लामाबाद में हूँ. Huh. And these are all by different organizations, right? Yes. Yeah. But you as a person are facing all of them together. Yeah. So there needs to be maybe some connecting point where you can co-create with the government solutions which eventually work. देखो, बिजली वाले अपना माइंड लगाएंगे, पानी वाले अपना माइंड लगाएंगे, टैक्स वाले अपना माइंड लगाएंगे, और it'll be very fragmented. तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द हाँ. गवर्नमेंट, राइट, कि इंटर डिपार्टमेंट अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, सही है, या जो नज़र नहीं आती आई हमें. थिंक नीड उसकी फील नहीं हो रही ना अभी. देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज यू फील दैट देयर इज अ नीड ऑफ दिस. सो जब आपके ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, वो अपने साइलोज में काम कर रहे हैं, they don't feel the need to collaborate and work together. It's a different way of thinking. Hamza, you have to understand that you and I may be the only ones who want to imagine it, जो बूमर्स की जनरेशन है ना, सही है, वो अभी तक हमारे पे है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिशियंस एंड एवरीवन एल्स जो उनके नीचे आता है, एंड दैट वे ऑफ वर्किंग हैज क्लियरली नॉट वर्कड. सही है, लेट्स एग्री ऑन दैट. पाकिस्तान एक जगह पे खड़ा है, ठीक है, जिस कोई हाल नहीं है, सही है. लेट्स से एवरीवन फेल्ड, सो नाउ वी नीड अ न्यू सिस्टम. ठीक है, उसके अंदर वही बूमर सोच बार बार इंजेक्ट कर दी जाती है, एंड वी कम बैक टू द सेम. Do you want me to answer the solution to that? Hey, Hamza. Yeah, no, I'm just saying. Hamza, I'm just saying whatever. Let's just wait and wait it out. जब वही कह रहा हूँ ना, मैं भी उसी चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ. फिर मुझे डर ये लगता है कि जो जेन एक्स है ना, उसके बाद वाली, वो बूमर्स के ना बड़े चहीते हैं. तो मैं कुछ अपने like I see few of my cousins and ये वो, they wanna be like boomers. They have millennial children and Gen Z children. ठीक है, वो सबसे ज्यादा बेचारे जो है ना कहीं फंस गए हैं, और उनकी ना अभी तक बारी आई है. बहुत 60-50 तक पहुंच गए. सही कह रहे हो, ठीक है, सही कह रहे हो. Even across the world, the problem, right, जो अच्छा क्लाइमेट चेंज का सबको पता है, सारे मुल्कों में फील हो रहा है, इंक्लूडिंग अमेरिका. बट अ बूमर by the name of Trump came in and said कि यार देखो, उन्होंने जिंदा ही नहीं रहना ना. Brexit देख लो, everywhere the wealth is with the boomers apart from these tech companies. इनको निकाल दो, सही है, फेसबुक और ये फलाना टेस्ला टुस्ला, ठीक है, इनको साइड पे कर दो. मेजर वेल्थ जो ऑयल कंपनीज हैं, जो बड़े कारखाने हैं, जो ये सारी बूमर्स के पास है, और वो उनकी पॉलिसीज अभी तक हम लेके घूम रहे हैं. एंड इट हैजंट क्लियरली वर्कड. बस अब वेट एंड वॉच की गेम है. कसम से मुझे भी पता है यही सीन है, लेकिन यार कसम से दिल जलता है सिर्फ इस चीज़ पे कि बहुत छोटे छोटे फिक्सेस से भी जो, और कुछ गवर्नमेंट बहुत बेहतर हो सकती, बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं. लाइक नॉट इवन लाइक बहुत छोटा सा उसका इम्पैक्ट होगा. आपकी फॉर एग्जांपल 1 विंडो ऑपरेशन कर दो, या फॉर एग्जांपल कोई भी इस तरह की, जैसा आई थिंक वी ट्राइड एज वेल कि यार ये 1 विंडो ऑपरेशन में जाए, लेकिन वो बीइंग इन द गवर्नमेंट नहीं कर सका. दैट्स कूडोस टू पाकिस्तानी वर्क एथिक. अच्छा, very interesting. You said something very interesting, which is कि single window वाली चीज़. I think we are as a generation at a point where we understand that it is not actually about digitalization. It's about putting together value chains. Linking all the to one place, na? Yes. So we understand कि it is ये जो शशका नहीं होता कि इधर कैमरा लगा दो.
It's the brain. The brain Yeah. is the beauty behind Yeah. it. It's the structure, the The nervous system. system, The yes, system itself. and the value chain जो कि उसके अंदर tap in हो रही है और capture हो रही है, which is critical. Yeah. So it's a knowledge economy, right? So Yeah. we need value chains very Yeah. well integrated. So I'm happy to be on the same page with you on that. And I think a lot of people, a lot of us think like that, and a lot of people are aware that this is like the pressing need of the hour. And I will just qualify what you said with a little something where you said कि बहुत fans हैं boomer के. I've had certain mentors, Hamza, who have taught me how to dream. Okay. So we can't completely say कि they don't have imagination or they don't want us to do well. No, they But- do. They But do. I agree that you have to be very strategic with who you look up to, lest you become completely tainted by the things you should not have adopted from them. यार you know? एवोल्यूशन का मसला है, सही है, कोई इसमें वो नहीं है. देखो वही एक रिटायरमेंट एज होती है, सही है, जो आप गवर्नमेंट सर्विस में भी और हर जगह पे एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन अपेरेंटली पॉलिटिशियंस जो हैं वो उसके बाद बनते हैं, जब वो वैसे फिजिकली काम करने के जोगे नहीं है, लेकिन चलो whatever, सही है. You are being brutal. No, I'm just Hamza, you're so brutal. listen to me. If you are at a bank or any private organization or even in the government, you get retired at 60. Yeah. Say our current or previous prime ministers or whatever are in their 70s right now and they don't want to let go. सही है. सही है. Okay. Let's be fair about that. ना ये तो ना कहो कि ये भी नहीं है. सही मैं है. तो वैसे कहती हूँ रिटायरमेंट एज और भी कम होनी चाहिए, बट चलो. है ना, 40 से 45 50 Absolutely. 50. पता है इस नहीं, आई हैव अ सेल्फिश रीजन फॉर इट. आई थिंक कि आपने स्टेट को अपना खून साड़ दिया उसके सिस्टम्स चलाते चलाते. यू शुड हैव एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सम गुड 20 years वेयर कुछ नहीं तो एक आप अपना क्यूट सा गार्डन जिसमें आप खीरे उगाओ, स्ट्रॉबेरीज लगाओ. आई एम जस्ट सेइंग कि पेंट करो. चलो फॉर द फ्यूचर, ठीक है, डू यू सी चलो अपने डिपार्टमेंट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, ठीक है. डू यू सी गुड विजनरी पीपल दैट you think given enough time and say authority or continuity, क्योंकि यहाँ पे भी posting transfer है, वो सब कुछ चल रहा होता है, I get that, ठीक है. But do you see hope? Do you see integration? Do you see technological advances? I can be hopeful, but I cannot put a timeline on it. Can't even really feel it for you. Do you understand कि हाँ there's this inkling or मेरी sixth sense ये कह रही है कि ये होगा या ये नहीं होगा. There's absolutely like Silence. it's a dark room. Yeah. And so what bureaucracy can do in all of this, I think is, or what I can do is experiment, to be honest, and hopefully not get punished for it. Because oh my god, Yeah. the price That you have to pay. that you have to pay to do something in good faith. No good deed goes unpunished. Absolutely. इसको अगर तुम अपने साथ बांध लो तो बस ठीक है ना. यार अली का भी कॉल है कि जिसके साथ नेकी करो उसकी शर से बचो. See, there's so much wisdom in that, और वो डेली मुझे देखनी पड़ती है. नहीं, so you should be ready for it ना. मतलब देखो, But Hamza, देखो, शाहीन का जो रास्ता था, ठीक है, अलामा इकबाल के शाहीन का, वो सोलो था. but Hamza, There's it not is a no lot of longer, legions of people. it's no longer about me or like other people in government service. It's about the state. It's about know. the survival. I know. And we really need to like सबको हाथ पाँव मारने हैं और मारने दें, ताकि जिसको जो चीज़ समझ आ रही है कि this might be a hit, to let it fly ना. And if it's a miss, don't just
go and finish that person's career off. जब तक बूमर्स नहीं जाएंगे ना, यही तो कह रहा हूँ, घूम फिर के कहानी में वहीं लेके आऊँगा, तो बूमर्स नहीं जाएंगे ना, कुछ नहीं हो सकेगा. और यही मुझे सबसे बड़ा डर है कि ये चलते जा रहे हैं. सही है, 70-75 पे भी वहाँ गैरी फैट सीन है. बाइडन कोई देख लो यार, पूरी दुनिया में, मतलब हमारे तो ही हैं लेकिन पूरी दुनिया में यही सीन. पता है मैं इस सारे से escape करने के लिए क्या करती हूँ? क्या? सीजन्स देखो. हाँ, बस डिस्ट्रैक्ट कर लो अपने आप को थोड़ा. हम लाइट करते हैं कॉन्वर्सेशन को, और कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा उधर चली गई. अच्छा, तो फिर ये तो फ्रॉम दैट केयर फ्री, full of ideas, full of dreams person to a very serious, calculated, mincing your words sort of a person. ठीक है, ये सिर्फ कैमरे की वजह से, या I think this is what you become in real life? So if we were off camera, We are off camera. Hamza, you would find me to be the same carefree, Okay. fun-loving and free-spirited person. Okay. But I have been told time and again in my service that you take your work seriously, but you have to seem to be taking your own self seriously as well. And I don't take myself seriously, Hamza. Life is काफ़ी serious नहीं है कि आप फिर अपने आप को भी मतलब seriously लो. But of course I understand where they're coming from, because their perspective is when you're dealing with the public, they need to see completely no nonsense and a very serious kind of person who is dealing with their affairs. So I think for that part, yes, I have to be a little serious. The decisions that we take has an impact, right? So I have to be like serious But you're about just the it. collector, right? I mean, you're Yeah. So it's not like you're responsible for where it's being spent. No. So but wo bhi, it has like its own dynamics, and I think any job that you do, it eventually does rub off of you. The nature of the job is such that whatever I say is very heavy on the receiving end, on the person receiving it. So I have to be careful with my words that I say to somebody who's not a friend, or who's not somebody I would interact with on a day-to-day basis. And that's about it. But I don't take myself very seriously. Chalo, And I take my job very seriously. To the extent I remember कि मैं कोई चीज़ देख रही थी on my laptop. It was some work, and a friend had to meet me, so he walked over, and then he paused, and eventually when he took the seat, he said, is this a good time to be with you? And I was like, yeah, absolutely. Why? It's like, you have a very serious working face, which I've never experienced in like the 10 years that I've known you. So I was like, oops, okay. I have a work face. So मुझे ये बताओ कि so you wish to remain forever? The kind of person I am, I don't ever limit myself. But as of now, I would love to be part of the state. Okay. Yes. Okay. कोई मुझे scars नहीं है that would make me think कि I'm done with this. I'm pretty sure there are people out there, though, Hamza, I'm again qualifying this, who are just so done with it because of the scars that they've received, and probably in goodwill. उनका अपना goodwill था and they got scarred. So touch wood. So as of now, I'm very good. I'm happy. And when you're taking decisions and you have a lot of responsibility, जो basic human need होती है ना, to be seen and to be heard, वो बहुत ज़्यादा fulfill हो रही होती है.
Okay. You And can see your work having impact. yes, Basically. so वो आपको ना by the end of the day it somehow makes sense to you कि ठीक है, you know, I'll work for the state. But I don't know what 10 years down the lane might be in store for me, because destiny is destiny, or Yeah. what 20 years down the lane Yeah. would be happening. So yeah, and I live in the moment. Yeah, I don't live many years ahead. Yeah. Do you now? I think गवर्नमेंट में रह के तो बड़ा मुश्किल काम है करना वैसे बाय द वे. नहीं 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 नहीं. कि आप एक तरफ अगर आपकी होराइजन पे नज़र ही नहीं है, अगर आप उस तरफ एम ही नहीं कर रहे, तो फिर आपकी होगी भी नहीं. आपको गवर्नमेंट में एम करने की ज़रूरत ही नहीं है ना. सो एज somebody who has been recruited through the CSS process, there is a set regimented career path for me. X number of years and you'll be X ठीक है? grade basically. हाँ, if I do my job, okay. I still remember this quote जो कि made absolutely no sense to me, because I've never been somebody who fantasizes mediocrity. I'm very averse to it. Listen, सुबह 7:30 से मेरा बायोमेट्रिक शुरू होता था. आप एक क्लास के अंदर गए हो, मैंने बायोमेट्रिक किया, फिर दूसरी क्लास के अंदर गए हो, बायोमेट्रिक किया, फिर तीसरी क्लास के अंदर गए हो, फिर वहाँ बायोमेट्रिक किया है. अब खाना लग रहा है, अब आप आ जाएं. अब चाय लग रही है, फिर अब नेक्स्ट क्लास है, फिर बायोमेट्रिक हो रहा है. अब खाना लग गया है, अब दोबारा क्लास में आ जाएं, दोबारा बायोमेट्रिक लग रही है. अब शाम वाली चाय लग रही है. शाम की बायोमेट्रिक कर करके आई एम टेलिंग यू, आई एम 2 minutes early everywhere. मतलब they have really चाय. That's a good thing though. yeah they have. But उसका दूसरी साइड ये है कि जब कोई 2 minutes लेट हो जाए ना, तो फिर चढ़ती है. मुझे वैसे खैर मुझे इतना रेजिमेंटेड होने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे जीन से मिल गया. So I have this मेरे बेसिकली दादा के अब्बू, ठीक है, सही है, बैक इन ब्रिटिश डेज. सो मेरे दादा जो है वो 100 साल जी हैं. तो माशाल्लाह. हाँ, अब उनकी डेथ हो गई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें. एनीवे, तो स्टोरी सर आती है कि मेरे दादा जो थे वो देवर बेसिकली छोटे थे, और मेरे जो पर दादा कह लो, सही है, हाँ, पर दादा जो थे ना, ही वॉज अ पोस्टमैन. ठीक है. ठीक है, तो इन द ब्रिटिश टाइम, सो ही वॉज आस्क्ड टू डिलीवर अ लेटर to this far off गाँव somewhere, ठीक है, in यूनाइटेड इंडिया. तो वो वहाँ गए और ना शाम हो गई. ठीक है, तो जब शाम हो गई तो उन्होंने कहा यार रास्ता ज़रा थोड़ा नासाज है, जो क्या नाम है वहाँ के लोग थे जो गाँव वाले थे, तो आप रात यहाँ रुक जाएं और कल चले जाएं. ठीक है, तो उन्होंने कहा फिट है. तो वो अगले दिन जब गए, उन्होंने रिपोर्ट बैक किया, तो उन्होंने कहा यार जो ब्रिटिश वहाँ पे ऑफिसर था उसने कहा कि यार तुमने तो इतने बजे आना था. तो उसने कहा नहीं, वो रास्ता उसने कहा ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है. सो यू आर सस्पेंडेड विदाउट पे फॉर 2 to 3 months. ठीक है. ठीक है. एंड माई दादा बेसिकली से इसके कहत आ गई थी घर में. Oh my God. ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट ये आया. I'm sorry to hear that. या तो उसका इम्पैक्ट ये आया कि मेरे दादा ने कहा I'll never be late. So you would always factor in some additional time कि मैं जल्दी पहुंच So जाऊं. he was always on time. Then he taught all of his sons to be on time. And then that sort of transferred to me through my father, Yeah. that I am always on time, usually. Like, obviously. And I'm anxious, अगर मुझे कोई 5 बजे कह देना कि यार 5 बजे पहुंचना है, तो ऐसा हो नहीं सकता मैं 4 बजे घर से ना निकलूं. सही है. So the thing is, I mean, I'm really happy that, you know, you कुछ तो, you know, you're also regimented है, मुझे बोल रहे थे. नहीं, तो रेजिमेंटेड होना बुरी बात नहीं है, मुझे रिसेंटली समझ आई है. हाँ. सही है, बड़ी रिसेंट. But the thing is, the journey that he had to go through, I would not wish this trauma upon anybody. Human souls are, I mean, they should be loved and understood. And I'm just, I know, but it's just that trauma से जो learning trigger होती है ना, वो आपके साथ रहती है. वो नहीं होनी चाहिए. नहीं यार, वैसे मैं तुम्हें ट्रॉमा बात बताऊं, ट्रेनिंग ये क्या बात है. नहीं ना, देखो फरा, अगर कोई चीज़ आपको इतनी ज़ोर से हिट ही नहीं की, ठीक है, आप उसे क्या ही सीखोगे. मैंने A-levels में गाड़ी मारी थी, ठीक है, अगर तुम्हें याद हो, पता नहीं तुम्हें नहीं याद होगा. खैर, A2 में बनीगाला से निकलते हुए मैंने गाड़ी मारी थी, जो I was in the car, and so what I did was, it was my fault. I took इधर सिंगल रोड है ना, तो
ब्लाइंड ठीक है। ब्लाइंड मोड पे बारिश हो रही थी, आई टुक इट एंड वो सामने से आगे मार दी उसने, मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती थी रादर। हाँ. वो दिन है आज का दिन You don't overtake on blind turns. एनी मोर, ठीक है, क्योंकि हर दफा दैट इंटायर Episode runs goes in my through head your for in a split second कि यार देखो अगर mind. नहीं सीखा उससे भी तो क्या, तो ट्रॉमास या ये जो जिंदगी के डाउन्स है ना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कुछ बड़े सिग्निफिकेंट लाइफ लेसन्स देने के लिए। आप गुजर रहे होते हो उनमें से, उस वक्त नहीं समझ आती, वही वाली बात है कि जब डिबेटिंग करी थी तो नहीं समझ आती, लेकिन अगर वो ट्रॉमा आया ना आपकी जिंदगी में, अब तो मुझे बताओ कि एक उस ट्रॉमा जो मेरे पर दादा ने लाइफ जिनसे में मैं और मिला ही नहीं, कितने उन्होंने अवॉइड कर दिया ना। एग्जैक्टली, नॉट जस्ट दैट, आई मीन उस एक ट्रॉमा से थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन को टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिल रही है। सही। वर्थ इट नाउ फॉर हिम? नो। I mean I wish के टाइम पे सब होते, बट उनको ये ट्रॉमा ना होता। या I would always I would always not want trauma for anybody. Yeah. But it's a reality of life. I get that. डेस्टिनी ब्रो, डेस्टिनी में नहीं लिखा ट्रॉमा, तो आ जाएगा ट्रॉमा, Oh, रोक तो damn. नहीं सकते। Yeah. So thank you for having me. नो वरीज, It was lovely. 1 घंटा 40 मिनट। Are you kidding me? Yeah, वो देखो, नहीं। No. I thought 40 minutes हुए होंगे।